ICAI campus placements for November 22 chartered accountants. काफी सारे students got worried, few students got dissatisfied, few students did not got a meeting link, few students got a good job offers, right? Lot of things happened in this ICAI campus placements, which was there for November 22 chartered accountants. But I would request all of you to please watch this video till end because I'm going to be discussing a hell lot of things. I'm also going to be discussing what went wrong, what went right, what is the further course of action which can be used by you guys. Next, what all places you can find out a jobs, right? And if you're struggling to get a jobs, I can help you out in following things, right? So please watch this video carefully till end. And I do understand that a lot of people are worried about this campus placements, right? चलो अब बात करते हैं वन बाय वन. 57th ICAI कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम था फॉर न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हर साल कैंपस में आते हैं, right? One of the most common problem which was there in every ICAI campus placement form or every time lot of students faces is कि सर I did not got a meeting link, मुझे मीटिंग लिंक ही नहीं आया. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, सर मीटिंग लिंक आया बट वहां पे इंटरव्यूअर ही नहीं था, ये मेरा प्रॉब्लम था. पॉइंट नंबर 3, सर कोई अपडेट ही नहीं आया, ना मेरा नाम रोस्टर में था ना मेरा नाम मीटिंग लिंक में था, मुझे कुछ भी नहीं आया, राइट? नंबर 4, सर मुझे कुछ अपडेट ही नहीं मिल रहा है आफ्टर ऐप की बंदा इंटरव्यूज. लॉट ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स आर गोना बी देयर, राइट? बिकॉज इतना ज्यादा वॉल्यूम होता है, बिकॉज ऑफ विच every time this problem comes in campus placements. How ICAI can handle it? Again, they need to figure it out. But yes, definitely you can drop your suggestions in the comment box. Few weeks before, I tried to write one LinkedIn post on the same. राइट कुछ समय पहले मैंने ICAI कैंपस पे एक पोस्ट लिखा था जहाँ पे मैंने इस चीज़ों को हाईलाइट की थी. एक सेकंड दो. हाँ, जहाँ पे मैंने इस कंसर्न को हाईलाइट किया था एंड लॉट ऑफ पीपल हैव कमेंटेड ऑन दिस एंड आफ्टर रीडिंग थ्रू दिस, राइट, इट रियली मेक मी टेंस दैट कि भाई सही में आई नीड टू गाइड टू द स्टूडेंट्स आउट बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वरीड अबाउट द सेम, राइट? लॉट ऑफ पीपल वर वरीड अबाउट कि सर मैंने कंसेंट दिया था बट अगेन मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहा है. दिक्कत ये है, एचआर को कॉल करो, एचआर फोन नहीं उठाता. ICAI को कॉल या मेल करो, डिफिकल्ट, राइट? वेरी रेयरली आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम द पीपल आउट. हो क्यों रहा है? व्हाई दिस प्रॉब्लम इज गोना बी कमिंग एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दिस कैंपस, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरी डैम कैंपस वेयर स्टूडेंट्स आर गोना बी फेसिंग इट, राइट? और इस चक्कर में क्या होता है, द पीपल लाइक अस फील हेल्पलेस. हम क्या करें यार, मेरे को ऐसा रिग्रेट फील होता है कि मैं क्या बोलूँ अब बच्चे को. बच्चा मेरे को कॉल करके बोलता है सर मेरे को मीटिंग लिंक नहीं आई. एवरी सेकेंड कॉल विच आई गेट, सर मीटिंग लिंक नहीं आई. सर कल मेरा इंटरव्यू है, क्या मीटिंग लिंक आएगी क्या? So I don't have a right answer for this. And to drill this out, I asked a lot of people working with the institute. I asked a lot of people working with the ICAI, and they just tried to give me very good answers, right? If you could just see this out, this was the guidelines which they have highlighted me, which says that ICAI do not guarantee the member will who has filled the form in the data will be actually be present for an interview. मतलब ये कंपनी को बोल रहे हैं, right? Or after the selection he or she would join the organization. ICAI do not guarantee that the recruiter will necessarily interview all the consulting candidates. ये एक वुमेन प्लेसमेंट प्रोग्राम के उन्होंने 3 नोट्स डाले थे, वहां से मैंने उनको देखा कि भाई ICAI कोई गारंटी नहीं करता. नाउ that is a responsibility of a recruiter to ascertain the accuracy of a credentials fulfilled by the members at the time of the interviews. Now यहाँ पे आप देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? होता क्या है, ICAI is gonna be acting as an intermediary between the students. यहाँ पे स्टूडेंट्स है और यहाँ पे कंपनीज है. कंपनीज को ऑनबोर्ड किया ICAI ने, दे हैव चार्ज सम फीस, इनसे कुछ फीस चार्ज की. स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड किया, इनसे कुछ फीस चार्ज की, एकदम नॉमिनल फीस चार्ज की, राइट? और ICAI दोनों को कनेक्ट करवा देता है. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि लॉट ऑफ कंपनी सेज दैट कि वी हैव 1000 वैकेंसीज एंड हार्डली वी कैन सी 20, 30, 40 नेम्स इन द रोस्टर्स, 50 नेम्स इन द रोस्टर्स. स्टूडेंट गेट एंग्री, स्टूडेंट बोलता है भाई ऐसा कैसे हो सकता है. नाउ हु कैन हेल्प यू आउट? One thing I can feel it out, institute should keep a check on the same. If they're saying that we are having 1000 vacancies, by at least if you're saying 1000 vacancies, you need to interview 10,000 damn candidates by using a 10x rule. But is there a bound or anything which the companies need to follow कि तो उनको करना ही है? मतलब पता नहीं ऐसा कहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, बट yes 10x rule अप्लाई होता है which companies should follow. और ये नहीं होता है, उस वजह से lot of candidates did not got a meeting. Now I also spoke to a lot of companies HR because a lot of HRs I am coordinating with the same, right? तो candidates मैंने companies के HR से भी बात किया कि why don't you call lot of candidates for the interviews? If you're saying claiming that you want 1000 candidates, why don't you call for interviews? They said that भाई शिवम भाई देखो समझो,
राइट। आई एम टेलिंग यू समथिंग विच इज फ्रॉम इनसाइट, मतलब ये आपको पब्लिकली कहीं किसी को नहीं पता, बिकॉज आई बीन वर्किंग इन टू दिस स्पेस फॉर ऑलमोस्ट 2.5 odd years, राइट। एवरी सेकंड थर्ड एचआर नोज मी वेरी वेल। अब होता क्या है कि सिंस आई हैव अ वेरी गुड टर्म्स विद दिस पीपल आउट, आई स्पोक टू देम, आई टोल्ड देम कि दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, व्हाई यू नॉट इंटरव्यूइंग टू द कैंडिडेट्स आउट। दिस इज दैट, देखो भाई होता क्या है, हम जब कैंपस में जाते हैं फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग करते हैं, जब हम कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, हमें कैंडिडेट्स का डिटेल्स अवेलेबल नहीं होता है in terms of email IDs and phone numbers. So we just shortlist the candidates based on marks, grades, attempts, particulate firm, number of partners, right? CVs, very difficult for them to open it, each and every CVs. तो CVs के basis पे shortlisting difficult हो जाता है. Few companies try to do it, few companies have a difficulty to do it. After they select the candidate out, मान लो उनको पास 100 candidates का list आया, right? 10x उनको rule apply किया जाता है कि 10x data वो बुला सकते हैं, है ना। तो मान लो मैं 100 कैंडिडेट्स को हायर करना चाह रहा हूँ, तो 1000 कैंडिडेट्स का मेरे को पूरा पूरे इसका डेटाबेस मिलेगा। जैसे मुंबई में 2000 बच्चे बैठे हैं तो पूरे का 2000 का मिलेगा, उसमें से मैं 1000 कैंडिडेट्स अच्छे शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ, राइट। अब 1000 कैंडिडेट्स मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया उसमें से। अब आफ्टर दैट इज डन, ये डिटेल्स जाता है कैंडिडेट्स के पास, कैंडिडेट्स इसको कंसेंट देते हैं। इसमें से मान लो 450 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड दिस कंपनी। आफ्टर दैट इज डन, कंपनी विल गेट द ईमेल आईडी एंड फोन नंबर फॉर दिस कैंडिडेट्स, और उसके बाद कंपनीज विल स्टार्ट स्क्रीनिंग देम। प्लीज अंडरस्टैंड इट। काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रोसेस नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा, इसी प्रकार से फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा। अब टोटल मान लो कि कंपनीज के पास 100 वैकेंसीज हैं, तो कंपनीज 1000 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले सकती है, बट उसको डेटा ही मिला मान लो 450 का फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग में और 200 का मिला सेकंड शॉर्टलिस्टिंग में, तो इनको मिला 650 का फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग में। एंड आफ्टर दैट इज डन, व्हाट हैपेंस इज दैट लॉट ऑफ कैंडिडेट्स मस्ट हैव गॉट अ कॉल, राइट। आपको एक प्री स्क्रीनिंग कॉल आया होगा। I don't know how many of you have got it, right? You can tell me in the comment section. But few of you must have got it, few of you must not have got it. So a lot of companies try to screen those candidates, right? Because it's very difficult to conduct the interviews for 650 candidates out. So what does company do? They do give a pre-screening call. अब कुछ कैंडिडेट को pre-screening call ही नहीं आया। अब इसका किसका गलती? I don't know. Who is gonna be monitoring this? Because check कोई नहीं रख रहा है ना यहाँ पे। दिक्कत ये हो रही है कि चेक कोई नहीं रख रहा है। अब इसका जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट को लेना चाहिए क्या? I don't know what is the right answer, but yes. Ideally they should take it. अब होता क्या है कि ये 650 कैंडिडेट्स हैं। अब इसमें से few students got a pre-screening call, few students did not got a pre-screening call, because of which the panic have been started. अब होता क्या है, after that is done, few students after the pre-screening call did not got a meeting link. So again that was again a panic which was created among the students कि भाई ये क्या नाटक है। मेरे को बोला एचआर ने कि आपको मीटिंग लिंक कल तक आ जाएगी। आप जरूर बताइए मुझे आपके साथ ये सिचुएशन हुई कि नहीं कमेंट सेक्शन में, बिकॉज I don't know how many of you have faced this situation, but I have seen this. A lot of students have been messaging me. I've been constant touch with all my students out every day. Daily I am doing a doubt solving work for them. और daily 5 से 6 doubt यही आते हैं। I don't know. I don't have a right answer. I request institute someone from them come up. At least they should talk to the students out, because that is something which is a genuine problem. Not this attempt, every damn attempt, because the students are facing this problem. ठीक है। Now इसके बाद स्क्रीनिंग हो गया, कॉल आया, बच्चा टेंशन में अगेन भाई मीटिंग लिंक आएगा कि नहीं आएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट इज डन, कुछ का इंटरव्यू होता है। आफ्टर फ्यू कैंडिडेट्स हैव गिवन द इंटरव्यू, अगेन इसमें बीच में एक और ग्लिच भी आ गया था शायद इस बार पोर्टल में। कंपनी हैव नॉट सिलेक्टेड द कैंडिडेट, को लग रहा था वो सिलेक्ट हो गया, पोर्टल पे दिख रहा था। लेटर ऑन कंपनी से बात हुआ, कंपनी बोल रही है कि हमने तो आपको सिलेक्ट ही नहीं किया। So all these things which are there, which are supposed to be fixed up, because it is something that parents look into, people look into कि भाई इसका जॉब लगी कि नहीं लगी, right? And this is something which is very serious, right? And I don't know what action institute is going to be taking after this, but I would request the students and the people out, please do not panic out, right? This is a situation which happens every time. I'll tell you what are the other ways off campus कैसे apply कर सकते हो, right? Again, the small campuses are going to be there, but that is something which will be helping you out. Now, तो ये हो गया, आपका इंटरव्यू हुआ। प्रॉब्लम्स हैं, राइट? लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, आई हैव ऑलरेडी काउंटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आउट। नाउ इज द टाइम वेयर आई वांट यू टू स्टे स्ट्रांग एंड आई विल बी देयर विद यू, आई विल बी हैप्पी टू सपोर्ट यू आउट, राइट? वॉट एवर वेज आई कैन डू इट, जस्ट यू नीड टू बी विद मी, राइट? कनेक्टेड विद मी फॉर दिस चैनल आउट। आई विल इंश्योर दैट कहीं ना कहीं आपको कैसे ना कैसे मदद करें। अब इसमें एक और चीज है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वरिड कि सर इस कैंपस में नहीं हुआ, मेरे कंसेंट वेस्ट हो गए। देखो, इट्स गोना बी देयर, प्रॉब्लम थी, नथिंग टू वरी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट if you sit crying every day looking into this, you'll not get a solution. What is a bigger solution for this? Let's see a bigger picture. I would say, what do you need to get a job? You need a one writer reference to get into one right companies. You need a one writer reference to get into one right companies.
Go to my LinkedIn profile. Every day you will find 5 to 6 people are getting a job and they have tagged me. You can connect with them. These are the people who will be ready to help you out. Trust me, because these are my students. I hope the students carry the ethics which they have, and they'll be really happy to help you out. What you need to do, you just need to go to my profile, see all activity which I have been tagged for. You'll be able to find out the people those who are posted. Number one. Number two, I also share the list of students who have been placed through, who are my students and have got placed. You can connect with them over LinkedIn. They'll be really happy to help you out. Point number two. Point number three, I'll tell you some other platforms where you can also apply off campus, because zaruri nahi कि all of the students are going to be getting placed to campus only, because ICAI itself states that कि a lot of students which were there were not able to get the job campus में. ठीक है, लास्ट टाइम भी देख लो, इतने स्टूडेंट्स रजिस्टर किए, इतने लोगों को ही जॉब मिला. गाली देना, गुस्सा करना सॉल्यूशन नहीं है. हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड आदमी है भैया, राइट? तो लेट्स फोकस ऑन द सेम. 2 सॉल्यूशन बताया, मेरे प्रोफाइल पे देखो. Write down the company's name, write down the CA Monk or Shivam. You'll find out the people working there, connect with them and reach out to them. What you need is a one right reference to get into one right company. That will help you out. That will solve your problem out. Second problem, a lot of students have been waiting for a campus and did not apply off campus. Please request you to start applying off campus, because a lot of companies have been hiring off campus. That is second. Third, I would request you to please apply into multiple other portals which are available, right? Naukri हो गया, IIM jobs हो गया, संभव प्रोग्राम है जो सेम का है. लॉट ऑफ अदर प्रोग्राम्स विच यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट. प्लीज अप्लाई देयर, बिकॉज वहां पे अप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. फोर्थ, लिंक्डइन पे योर प्रोफाइल शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग. योर प्रोफाइल शुड बी स्टैंड आउट, राइट? दैट इज समथिंग विच यू शुड हैव. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरा प्रोफाइल गो थ्रू करो. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रोफाइल कैसी दिखनी चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट प्लीज क्रिएट अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल. दैट इज पॉइंट नंबर 4. Fifth is very important, should start networking with the people out. To do that, I'll be organizing some networking events in this Sunday or upcoming Sundays, right? Just stay connected in my Telegram group, CA Monk 8, right? And नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, उस पर भी ज्वाइन कर लेना. कोई भी नेटवर्किंग इवेंट आएगा, कुछ भी आएगा, डेली इवेंट्स भी आर बी कंडक्टिंग, प्लीज प्रेजेंट देयर, बिकॉज द मोर यू नेटवर्क, द मोर चांसेस दैट you'll make some good friends out and people will refer you. That is there. Now, with this institute is also going to be having a small campus. देखो, generally the purpose of having a big campus and small campus is the same. कि अगर आपको कोई big campus में selection नहीं हुआ, तो you can move to small campus out. Now the question comes is कि sir, if I got selected in one of the companies in a big campus, but I did not give a consent, am I eligible for a small campus? The answer is yes. अगर आपने consent नहीं दिया तो आप eligible हो. But if you have given a consent, आपने वो टिक कर दिया था जाके, और आपका पोर्टल का एक्सेस बाहर से अब एक्सेस कर ही नहीं पाओगे. अगर आपने कंसेंट दे दिया, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इट. बट इफ यू हैव नॉट गिवन अ कंसेंट, यू विल बी एबल टू एक्सेस इट आउट. एज सिंपल एज दैट. अगर आपके साथ वो सिचुएशन नहीं थी, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गिव अ, or you will be able to give the interviews for a small campus. So do companies comes in the small campus? The answer is yes. Last time a lot of companies came in the small campus. A lot of candidates got shortlisted in small campus out. A lot of candidates also got the good companies from small campus, right? But do I again sit idle? No. I will say that parallelly, please apply on the off-campus companies as well, right? So that is there. Now एक बार small campus की थोड़ी सी timelines देख लेते हैं. Let's this note it down. This is something which is important, right? Let's try to do this out. हाँ, अब these are the last date for registration for organization, not that relevant. So do I need to register again for a small campus? The answer is big no. Same registration में ही आपका काम हो जाएगा. अच्छा, अगर किसी ने बिग सेंटर के लिए रजिस्टर नहीं किया था, राइट, यू कैन जस्ट टॉक टू इंस्टीट्यूट और मेल देम कि यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर अ बिग सेंटर, आई वांट टू रजिस्टर फॉर अ स्मॉल सेंटर. कैसे करना है, प्लीज एसएप उनको मेल करके बात कर लो. ठीक है, ओके. लास्ट, अब कोई कह रहा है सर फोन ही नहीं उठाते. ठीक है यार, मतलब आई कैंट हेल्प यू आउट विद दिस अगेन अ सीरियस प्रॉब्लम व्हिच इज सपोज्ड टू बी हाईलाइटेड. आई रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट कि भाई सुधार दो यार, राइट. एक सहायता करके नंबर चालू किया है, बट अगेन it's not for the campus, right? It's for the other doubts and queries which are there. Okay. Last date for online registration, last date for online shortlisting for the organization. The online shortlisting होगा, online consent given by the candidates. Again same. तो consent का जो deadline है, आपका shortlisting जो आपको दिखेगा again will be in the month of April. तो 1st और 2nd April को you will be able to see the shortlisting. The first shortlisting which is there. Sir, इसमें same I'll get the 4 consent, right? 4 आपको फिर से ऑप्शन मिलेंगे टू गिव अ कंसेंट, राइट, व्हिच इज देयर. तो यहाँ पे आपको अगेन 4 कंसेंट मिलेंगे. फिर सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन होगा. सेकंड कंसेंट आपको देना है 7th, जैसे बिग सेंटर का हुआ था वैसे ही आपका होगा, राइट. तो 7th अप्रैल का आपका सेकंड शॉर्टलिस्टिंग आएगा.
राइट एंड उसके बाद अगर टेस्ट वेस्ट रहा तो 11th से एंड इंटरव्यू डेट्स आर गोना बी मेंशन्ड हियर टॉप पे राइट इंटरव्यू डेट्स आर गोना बी मेंशन्ड हियर ठीक है तो इस हिसाब से आपका स्मॉल सेंटर वर्क करेगा ठीक है तो जस्ट कीप आई ऑन द डेडलाइंस विच आर देयर है ना अप्रैल में रहेगा इसके बीच में लास्ट टाइम ऑल्सो व्हाट इंस्टीट्यूट डिड वाज के दे गेव अ चांस और ऑप्शंस टू चेंज दी स्मॉल सेंटर्स लास्ट टाइम दिया था इस बार का पता नहीं अब विल दे गिव अ चॉइस और नॉट राइट बट लास्ट टाइम दे हैव गिवन इट होपफुली दे विल आल्सो गिव इट फॉर द करंट ईयर कैंपस राइट इसके अलावा आई डू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन फेसिंग अ प्रॉब्लम इफ यू हैव एनी थॉट प्रोसेस कि भाई इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से ये चेंजेस कर देना चाहिए 6 की जगह 4 की जगह 6 कंसेंट स्टूडेंट्स को अलाउ करने चाहिए राइट सेम डे में काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज क्लैश हुए थे तो अगेन मतलब if you have any suggestion put it out in the comment section I will try to put it to right authority who are there in the institute and I will request all the students not to panic not to worry right I know that this is a situation which is a panicful situation who is supposed to be blamed I don't have an answer कंपनी की गलती है इंस्टीट्यूट की गलती है कि आपकी गलती है या किसकी गलती है नो वन नोज बट what is one thing which is in your hand is to ensure that your CV becomes strong your profile becomes strong your personality becomes strong and you prove it to the world that you're better than others trust me you'll get a job ASAP ठीक है now I do understand many people will also feel like कि सर इसको जॉब लग गई मेरे दोस्त को जॉब मिल गई उसके 4 अटेम्प्ट थे उसको मिल गई मेरे को क्यों नहीं मिली या मेरे को उससे कम थे प्लीज डो नॉट पैनिक आई डू अंडरस्टैंड एक आधी महीने की बात है we'll figure it out I'll have more and more sessions I'm planning to have some sessions from Monday itself but yes you also need to understand that you need to showcase to the interviewer that you're different from others and for that you need to build your profile you need to have a good knowledge one thing which I have seen in a lot of students during a pre-screening call mess up a lot of mess up right a company is giving a call for your statutory audit domain they ask you have you worked in your articleship for a statutory audit domain the candidate says thinks twice and give the answers right if you're not giving the answer with the confidence definitely the interview is going to be restricting himself from calling you for upcoming interviews and calls what you need to do is that you need to be prepared well for interviews if you need any help just let me know again in the comment section we'll be happy to help you out right and all the best for the interviews those who have guys interviews in the upcoming days do not worry do not panic CMOng team is with you I am with you just join my telegram group I'll be posting a lot of vacancies there right a lot of companies which are hiring off campus you'll be able to get it from there right and all the very best to you guys because just applying on the link will not help you out you need to have a reference to push your CVs out that will help you out ठीक है इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू थैंक्स बाय बाय